ദശകം 84 സമന്ത പഞ്ചക യാത്രയും ബന്ധുമിത്രാദി സമാഗമവും. क्वचिददतपनोपरागकाले पुरिनिदत्कृतवर्मकामसूनु यदुकुलमहिलावृतः सुतीर्थं समुपगतोऽसि समन्दपञ्चकाख्यं बहुतरजनदाहिताय तत्र त्वमपि पुनन्विनिमज्य तीर्थतोऽयं द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशिः सममिलदा कुरु पाण्डवादिमित्रैः तव खलु दयिता जनैः समेता द्रुपदसुधा त्वयि गाढभक्तिभारां तदुदित भवदा हृदि प्रकारैः अधिमुमुदे सममन्यभामिनीभिः तदनु च भगवन्निरीक्ष्य गोपान् अधिकुतुकादुपगम्य मानयित्वां चरतरविरिहातुराङ्गलिखेखाः पशुपवधू सरसं त्वमन्वयासीः सपदि च भवदीक्षणोत्सवेन प्रमुषितमानकृदां निदम्बिनीनाम् अधिरसपरिमुक्तकञ्जुलीके परिजय हृद्यतरे कुजेन्यलैषी निपुजनकलकै पुनः पुनर्मे समुपगतैर्यति विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भणे त्वयिद्राक् अधिविवशा खलु राधिका निलिल्ये अपगतविरहव्यधास्तदा ताः रहसि विधाय ददाद तत्त्वबोधं परमसुखचिदात्मकोऽहमात्मेति उदयदु विस्फुटमेव चेदसीति सुखरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवदुद्धवोपदेशैः समभवदूत परं तु मासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्तां मुनिवरनिवहैस्तवादपित्रा दुरिदशमाय शुभानि पृच्छ्यमानै त्वयि सदि किमिदं शुभान्तरैरिति उरुगसि तैरपि याजितस्तदासौ सुमहति जने विधायमाने प्रमुदितमित्रजने सहैव गोपाः यदुजनमहितास्त्रिमासमात्रं भवदनुशङ्करसम्पुरे बभेजुः व्यपगमसमये समेत्य राधां दृढमुपगूह्य निरीक्ष्य वीदखेदां प्रमुदितहृदयपुरं प्रयातः पवनपुरेश्वर पाहि माङ्गदेभ्यः सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।